हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज हम लोग आए हैं येजडी के शोरूम में बिकॉज वी वांट टू पुट आवर हैंड्स ऑन द न्यू येजडी एडवेंचर। यस यू आर राइट, हम लोग आज आए हैं टेस्ट राइड मारने के लिए। सो वी आर आउटसाइड द येजडी स्टोर राइट नाउ। तो हम लोग जुगाड़ करते हैं अंदर टेस्ट राइड का, तब तक आप लोग स्पेसिफिकेशन चेक करना। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मेरा नाम अनिकेत साथी है। मेरा नाम सैयद अजहर अब्बास। और हम लोग कहाँ मिले तुम लोग? जावा यजदी के शोरूम के बाहर। चलो बाय बाय। Ideal Java Limited was an Indian motorcycle company based in Mysore, which sold licensed Java motorcycles beginning in 1960 under the brand name Java, and from 1973 as Yezdi. In January 2022, Yezdi was relaunched by Mahindra & Mahindra. 3 models were introduced: the Roadster, Scrambler and the Adventure. We are going to talk about the on-road price and the specifications of Yezdi Adventure. Yezdi Adventure is an adventure bike available at a starting price of 2,11,986 rupees in India. It is available in 3 variants and 3 colors, with top variant price starting from 2,20,986 rupees. The Yezdi Adventure is powered by 334cc BS6 engine, which develops a power of 29.7 bhp and a torque of 29.9 Nm. At the heart of the motorcycle is a 334cc single-cylinder liquid-cooled engine linked to a 6-speed gearbox. The motor on the Adventure is tuned to deliver 29.8 bhp at 8,000 rpm and 29.9 Nm of peak torque at 6,500 rpm. With both front and rear disc brakes, Yezdi Adventure comes with an anti-locking braking system. This adventure bike weighs 188 kgs and has a fuel tank capacity of 15.5 liters. The new Yezdi Adventure is designed for long-distance riding and off-roading. The styling cues include a round headlight, a windscreen, a tall-set front fender, split-style seats, a side-slung exhaust, and wire-spoked wheels. The feature list on the new Yezdi Adventure comprises of full LED lighting, a Bluetooth-enabled digital instrument cluster, a USB port, a USB Type-C port, and saddle stays as standard. The Bluetooth module brings access to turn-by-turn navigation and call and message notifications as well. The braking duties are handled by 320 mm disc with a floating caliper at the front and a 240 mm router with a floating caliper at the back. The safety net comprises a Continental Source 3-level ABS, the road, off-road and the raid mode as well. We also got an opportunity to do a small test ride on the new Yezdi Adventure. So let's see how the test ride was. Finally, I have got my hands on the Yezdi Adventure. काफ़ी अच्छा पावर है क्योंकि 30+ bhp दिया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द टेस्ट राइड रिस्ट्रिक्शंस हम लोग ज़्यादा लंबा राउंड नहीं मार पाएंगे, पर देखते हैं फिर भी कितना लेवरेज कर पाता हूँ मैं इस टेस्ट राइड को. और दिन का टाइम में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, पर नो डाउट द पावर इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से सुपर्ब.
कंसोल मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, एकदम ब्यूटीफुल कंसोल लगा, विद अ गुड फ्यूल इकोनॉमी। थोड़ा सिटी में संभाल के चलाना पड़ेगा हम लोगों को। सिटी में भी हैंडलिंग वाइज अच्छी है। आई रियली लाइक द मिरर्स बिकॉज क्वाइट बिग इनफ ताकि आपको पीछे का व्हीकल दिखाई दे। और ये देखिए पिकअप, ये पिकअप है इसका। थोड़ा ट्राई कर लिया, खाली रास्ता मिला तो। पर ऑल इन ऑल द फीलिंग इज़ वेरी गुड, नो वाइब्रेशंस एट ऑल। हैंडल भी काफ़ी अच्छा दिया, यू कैन सिट अपराइट। और ये फास्ट तो भागती है, और ये ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ड्यूल चैनल ABS है। ऑल इन ऑल द फीलिंग इज़ ऑफ अ वेरी गुड टूरर। हाइट काफ़ी अच्छी है। और कॉर्नरिंग में देख लेते हैं। देखो ज़्यादा कॉर्नरिंग मिल रही नहीं है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट क्योंकि सिटी में है हम लोग अभी। और ये भाई हॉर्न क्यों मार रहे हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो प्लेसेस वेयर आई कैन ईजी टेक इट फॉर अ स्पिन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। सो हियर यू कैन सी द न्यूट्रल, ये पार्किंग लाइट ऑन है इसकी, द हज़ार्ड लाइट यू कैन से, द डिस्प्ले Yezdi की ब्रांडिंग। और हाँ, यहाँ पे एक आपको विंडशील्ड भी आएगा which is right now not installed on this motorcycle, which is for the test ride. काफ़ी सारे स्विच है यहाँ पे। There are different riding modes as well. और ये देखिए इसका पिकअप था, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, नाउ इट्स थर्ड गियर। काफ़ी अच्छा हैंडलिंग है, डिस्क ब्रेक मैनेजमेंट अमेजिंग। व्हाट अ फील, अमेजिंग फील आ रही है। अभी थोड़ा मुझे ये भले थोड़ी सिटी की ट्रैफिक के पर भगाने मिला है। ऑसम, 30+ bhp का पूरा पैसा वसूल है। मतलब हाईवे पे तो भाई ये हवा से बात करेगी। वाह। और ये हम पहुंच गए वापस शोरूम पे। The specifications and the features make this motorcycle a complete tourer as per our experience. Though it was a small test ride, but we could feel the power and the enthusiasm with this new machine in the market. We recommend you to go get your test ride and have the experience and comment on how you felt. That's it from Desi Indian Riders for today. If you like this video, do not forget to give it a thumbs up. If you're new to the channel, do not forget to subscribe to our channel. We'll be back soon. Until then, you guys take care of yourself, and as always, ride safe.